Good morning, students. Yesterday, we revised types of leaves, venation and types of venation, and parts of a flower, right? Today, we are going to do revision 4 of chapter 2, plant, structure, and function. Let's see what are the topics that we will revise today. Today, we will revise parts of the flower in detail. So, yesterday we saw the diagram of the structure of the flower and we saw what is each part called. Okay, so we tried to remember the names of all the parts and we tried to remember the structure. Today, we will learn more about the parts of the flower in detail so that we're able to explain the function of each part. Okay, that is first. Second, we are going to revise what is pollination and why is pollination so important for us. Okay, these are the two things that we are going to revise today. Parts of the flower in detail, pollination, what is pollination, क्या होता है pollination and why is it important, pollination इतना important क्यों है. All right, this is the structure that we saw yesterday. A lot of you drew this structure in your notebook and I'm very very proud, very good. Just have a look at the structure once again. Try to remember all the parts, see where are the petals, sepals, stamen, anther, filament, pistil, stigma, style, ovary, pollen tube. Try to remember all of these structures. You can have a look at this diagram, pause the diagram, have a look at this diagram again. This is the structure of a flower and these are some important parts of a flower. Okay, let's go through the parts of the flower once again. There are four main parts: calyx, corolla, androecium, gynoecium. Let's repeat again. There are four main parts of a flower: calyx, corolla, androecium, gynoecium. Calyx is also called sepals, corolla is also called petals, androecium is also called stamen, gynoecium is also called pistil. Androecium is the male reproductive part, gynoecium or pistil is the female reproductive part. Androecium has two parts, anther and filament. Gynoecium has three parts, stigma, style, and ovary. All right. Okay, now let's see the description and function of each part. Okay, let's see calyx first. Calyx or sepals are the green colored parts below the petals. They may be separated or fused with the petals. Okay, कैलिक्स और सेपल्स वो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के जो पेटल के नीचे पाए जाते हैं. तो आप अगर कोई भी फूल तोड़ेंगे तो आप देखेंगे वो फूल के पेटल्स के नीचे थोड़ा सा लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं. लीफ जैसे वो हरे भी हो सकते हैं और कभी कभी कलरफुल भी हो सकते हैं. ठीक है, so they are green colored parts. Calyx or sepals are green colored parts below the petals. They may be separated or fused with the petals. वो petals से कभी कभी चिपके रहते हैं, कभी कभी अलग रहते हैं. ठीक है, तो पेटल्स के नीचे जो लीफ जैसे रहते हैं ना, ग्रीन ग्रीन, आप कभी गुलाब का फूल तोड़ेंगे तो लाल लाल पेटल्स के नीचे ग्रीन ग्रीन पत्ते टाइप के होते हैं, उनको कैलिक्स बोलते हैं या सेपल्स बोलते हैं. उनका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन मतलब क्या, वो करते क्या है, वो फूल में क्यों होते हैं? दे प्रोटेक्ट द राइजिंग बड्स, राइट. तो जब फूल छोटा होता है, जब वो फूला नहीं होता है, जब वो छोटा होता है, तो ये सेपल्स वो बड को प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, जो सेपल्स होते हैं वो बड को प्रोटेक्ट करते हैं. तो जब फूल पूरी तरह से उगा नहीं होता है, जब तक वो फूल पूरी तरह से जब तक नहीं उगा होता है, तब तक सेपल्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं. सो sepals protect the rising bud. So we studied about calyx. Okay, calyx or sepals. All right. Now look at corolla, the second one. Look at corolla. Description. Corolla or petals are the brightly colored parts of the flowers. Right? We all know what are petals, right? फूल की पंखुड़ियां जिसे बोलते हैं, right? We all know what are petals. They are brightly colored parts. Okay, they are colored very very brightly. Okay, so corolla or petals are the brightly colored parts of the flower. अब petals या corolla, जिसको हम corolla बोलते हैं, petals, उनका फंक्शन क्या होता है, ये corolla क्या करता है, क्यों होता है ये flowers में?
So let's see the function. Okay, petals attracts bees, insects, and birds for pollination. They help in differentiation of one flower from the other. Okay, so petals बीज और इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं. हम देखेंगे पॉलिनेशन क्या होता है, लेकिन पॉलिनेशन होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बीज, मधुमक्खी या इंसेक्ट्स फूल के पास आए. ठीक है, तो क्योंकि पेटल्स इतने ब्राइट होते हैं और इतने कलरफुल होते हैं, तो उनसे बीज और इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं. तो इन ब्राइटली कलर्ड पेटल्स के कारण बीज और इंसेक्ट्स फूल के पास आते हैं, और जब ये फूल के पास आते हैं तब पॉलिनेशन होता है. राइट, तो पॉलिनेशन होने के लिए पेटल्स का होना बहुत ज़रूरी है. क्यों पेटल्स का होना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि पेटल्स के कारण ये बीज और इंसेक्ट्स फूल के पास आते हैं. सो पेटल्स अट्रैक्ट्स bees, insects and birds for pollination. Second is they help in differentiation of one flower from the other. ये तो बहुत easy है. आपको कैसे पता चलेगा कि ये गुलाब का फूल है या मैरीगोल्ड है या लिली है? आपको देखकर उसके कलर से पता चलेगा. राइट, लिली वाइट कलर का होता है, रोज रेड कलर का होता है. तो एक फूल को दूसरे फूल से अलग दिखाने के लिए petals are very important. Then let's look at androecium. What is androecium? All right, androecium is the male reproductive organ and is also known as stamen. It consists of two parts, anther and filament. This is something we have already discussed, we have already seen. Androecium is the male reproductive part. Okay, it is also known as stamen. Androecium को और क्या बोलते हैं? Stamen. Androecium consists of two parts, anther and filament. Okay, androecium में two parts कौन से होते हैं? Anther and filament. Alright, that is the description. Now let's see the function. Okay, क्या करता है androecium? क्यों important है? So pollen is produced by the stamen. That is their function. एंड्रोशियम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो पोलन प्रोड्यूस करता है. हमने देखा था ना, पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी है. पॉलिनेशन से फूल फ्रूट बनता है. ठीक है, फूल जो है वो फल बनता है. राइट, एंड दैट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन. राइट, फॉर एग्जाम्पल मैंगो का प्लांट है अगर, तो जब मैंगो का सीड उगेगा, मैंगो का फल उगेगा और इसमें से सीड निकलेगा, तभी हम दूसरा मैंगो का प्लांट लगा सकते हैं. राइट, तो एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट उगाने के लिए फूल से फ्रूट बनना ज़रूरी है. राइट, और फूल से फ्रूट बनने के लिए पॉलिनेशन होना ज़रूरी है. तो ये पॉलिनेशन के लिए पोलन कौन बनाता है? स्टेमन बनाता है. एंड्रोशियम पोलन बनाता है फॉर पॉलिनेशन. सो पोलन इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेमन फॉर पॉलिनेशन. दैट्स व्हाई एंड्रोशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, now let's look at gynoecium. Okay, this is the innermost part and the female reproductive organ, which comprises three parts: stigma, style, ovary. This is collectively known as the pistil. Okay, so gynoecium is the female reproductive part, which is also known as pistil. Okay, gynoecium is the female reproductive part, which is also known as pistil, and it has three parts. Gynoecium में तीन parts होते हैं. Gynoecium को pistil भी बोलते हैं. Gynoecium female reproductive part है और इसके तीन parts होते हैं. कौन से तीन parts? Stigma, style, ovary. ठीक है. But why is gynoecium important? Gynoecium क्या करता है? Gynoecium क्यों important है? Function क्या है gynoecium का? तो gynoecium after fertilization the ovary turns into the fruit to keep the seed. तो हमने देखा था कि pollination होने के बाद जब पोलन स्टेमन प्रोड्यूस करता है, पोलन स्टेमन पे स्टेमन बनाता है पोलन, तो वो पोलन जब बीज और इंसेक्ट्स ओवरी में डालते हैं तो क्या बनता है? फ्रूट. राइट, so it is this ovary, it is this gynoecium which then turns into the fruit. right, और वो fruit क्यों ज़रूरी है? because fruit produces the seed. right, और जब seed produce होता है तो हम एक plant से और बहुत सारे plants उगा सकते हैं.
right? So that is why gynoecium is important, because after fertilization, after pollination, the ovary or the gynoecium or the pistil turns into the fruit. Okay, the gynoecium turns into the fruit, and that is how we get the seeds, right? हमको fruit से seeds किसके कारण मिलता है? gynoecium के कारण. That is why gynoecium is very important. All right, try to remember this. I know this is a little difficult. If you don't understand anything, please text Didi on WhatsApp. I will try to explain it to you again. Okay, this table is very, very important. Try to remember the four parts: calyx, corolla, androecium, gynoecium, and try to remember why are they important. Calyx, it protects the bud को protect करता है. Corolla, insects, birds और bees को attract करता है, attracts birds, bees and insects for pollination. एंड्रोशियम क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द पोलन बनाता है एंड्रोशियम, इसलिए इंपॉर्टेंट है. एंड गाइनोशियम, वाई इज गाइनोशियम इंपॉर्टेंट? क्योंकि पॉलिनेशन के बाद गाइनोशियम फ्रूट बन जाता है जिससे हमको सीड्स मिलते हैं. ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर पॉलिनेशन the gynoecium turns into a fruit, and that is how we get seeds. All right, try to remember the functions of all the four parts. Now let's quickly see what is pollination and who are the pollinators. Okay, so what is pollination? Pollination occurs when pollen is moved within flowers or carried flower to flower by pollinating animals such as birds, bees, bats, butterflies, moths, beetles, or other animals, or by the wind. Okay, तो व्हाट इज पॉलिनेशन? जब पोलन स्टेमन से पिस्टल में जाता है, तो ये सब पॉलिनेटर्स क्या करते हैं? बर्ड्स, बीज, बैट्स, बटरफ्लाइज, इन सबको क्या बोलते हैं? पॉलिनेटर्स. क्यों? क्योंकि ये पॉलिनेशन करते हैं. ठीक है, तो ये पॉलिनेटर्स, बर्ड्स, बीज, बैट्स, बटरफ्लाइज, ये सारे पॉलिनेटर्स क्या करते हैं? पोलन को स्टेमन से उठाते हैं. स्टेमन पोलन बनाता है ना, तो स्टेमन से पोलन को उठाते हैं और पिस्टल में डाल देते हैं. ठीक है, they take the pollen from the stamen and put it in the pistil. What happens after that? The gynoecium or the pistil turns into a fruit. Okay, so how does pollination happen? Pollination occurs when pollen is moved from the stamen to the pistil. ये एक फ्लावर के, दिस कैन हैपन विद इन अ फ्लावर और फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर के स्टेमन से एक ही फ्लावर के पिस्टल में भी हो सकता है, या एक फ्लावर के स्टेमन से दूसरे फ्लावर के पिस्टल में भी हो सकता है. जब पोलन, एक पॉलिनेटर जब एक पोलन को, जब बहुत सारे पोलन्स को एक पॉलिनेटर स्टेमन से उठा के पिस्टल में डालता है, उसको पॉलिनेशन बोलते हैं. ओके, सो व्हेन पोलन इज मूव्ड फ्रॉम द स्टेमन टू द पिस्टल. ओके, what does pollination do? When pollination happens, the transfer of pollen in and between fruits of the same species leads to fertilization and successful seed and fruit production. ठीक है, जब pollination होता है, जब pollination से पोलन स्टेमन से पिस्टल पे जाता है, तो पिस्टल क्या बन जाता है? फ्रूट. ठीक है, और उस फ्रूट, जब वो फ्रूट बनता है तो हमको सीड्स मिलते हैं, और जब हम सीड्स मिलते हैं तो हम एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स उगा सकते हैं. सो दैट इज व्हाट पॉलिनेशन डज. नाउ लेट्स सी व्हाई इज पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट एंड व्हाई आर पॉलिनेटर्स इंपॉर्टेंट. बीज एंड बर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? कैन वी सर्वाइव विदाउट देम? नो, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट बर्ड्स एंड बीज. व्हाई? बिकॉज ये बर्ड्स एंड बीज के कारण ही हमको फ्रूट मिलते हैं, और इन फ्रूट से हम और प्लांट्स उगा पाते हैं. अगर बर्ड्स और बीज नहीं होंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा, और पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्लावर से फ्रूट नहीं बनेंगे. जब फ्रूट नहीं बनेंगे तो हम एक प्लांट से और प्लांट्स नहीं उगा पाएंगे, राइट? तो क्या होगा? प्लांट्स खत्म हो जाएंगे. प्लांट्स खत्म हो जाएंगे तो वी विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू सर्वाइव, राइट? So that is what, right? If all the birds and bees die, we won't be able to survive. That is why birds and bees are very, very important. Okay, all right.
So what you are going to do now is two next steps like every class. You are going to read a fact sheet. दीदी आपको एक fact sheet भेजेंगे, ठीक है? आपको वो fact sheet पढ़ना है. um, दो फैक्ट शीट भेजेंगे आपको दीदी, वो फैक्ट शीट पढ़ना है अच्छे से. और दीदी एक वर्कशीट भेजेंगे, वो वर्कशीट कंप्लीट करना है आपको. वो वर्कशीट अपनी नोटबुक में लिखना है और दीदी को फ़ोटो भेजना है. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया इस वीडियो में तो दीदी को बताना है, दीदी आपको दोबारा समझाएंगे, ठीक है? क्या करना है इस वीडियो देखने के बाद? फैक्ट शीट पढ़ना है और वर्कशीट सॉल्व करना है. ओके, thank you everyone. Please let me know if you have any doubt on WhatsApp. We'll solve it together. Bye bye.